Electromagnetic Induction JEE Mains PYQ. So first we'll start with the January shift. So ours will be the January shift. The chapter name is Electromagnetic Induction. Right. So we'll start with the first question. A rectangular loop of sides 12 centimeter with its sides parallel to x and y axis. X axis length will be 12 centimeter, y axis 5 centimeter. Moves with a velocity in the positive x direction in a space containing variable magnetic field in the positive the direction. So we have here, first we'll start with the x and y axis. Fine. Okay, this is the coordinate system. We'll draw it. A problem, we can call it as to be a tougher, little bit tougher. In general, JEE Mains will be little bit formula based. This is little bit, you're asking, you can see the question itself is lengthier based on two different ideas. Positives containing a variable magnetic field in the positive z direction. Means the field will be directed along positive z axis. It contains a rectangular loop. So we'll bring that loop. Okay, this is a loop. Okay, fine. या ये जो लूप है तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे है कितना स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसका जो लेंथ है 12 सेंटीमीटर है और ए 15 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर. ओके फाइन. देन सो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ये जो वेरिएबल है ना. So it's telling like in a space containing a variable magnetic field in positive, the field has a gradient of, what do you mean by gradient? जो क्वांटिटी जो स्पेस से चेंज होता है उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं. सो जो क्वांटिटी विथ टाइम इफ इट चेंजेस उसको हम रेट बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या दिया कि ग्रेडियंट दे दिया है. सो ग्रेडियंट बोले तो dB by dx. This is equal to 10 to power of minus 3 Tesla by centimeter. Will convert ten to power of minus 5 Tesla per meter. So then this should become equal to dB equal to 10 to power of minus 5 into dx. इसका value depends on x. This point is x equals 0. So at x equals 0, the field is 0. At any distance x, let it be b. So इसका value है 10 to power of minus 5 into x. B is variable. B is variable. And okay, this is a meaning gradient, a quantity which varies with space. जो भी quantity अगर x, y या z direction से vary होता है उसको हम gradient बोलते हैं. Okay, fine. Next, और एक along the negative x direction. So ये जो magnetic field vary हो रहा है, this is varying along negative x direction. So as x increases, so this negative sign यहाँ पे हम ले लेंगे. Okay, fine. इसको होने के बाद next वो gradient का no dB by dt. What is dB by dt? dB by dt कितना दिया है 10 to power of minus 3 Tesla per second. Fine. इसका meaning rate means dB by dt. Gradient means dB by dx. तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड सर लगे इसमें से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है?
both are magnetic field only. So you write this is B1 better. इसका हम B1 लिखेंगे. ये जो टाइम से वेरी होता है, let this be B2. The same magnetic field, it varies with in space and also in time. Varies along x-axis. This is varies with the time. Okay, agreed. Next, इसका EMF ले लेंगे. So ये जो रॉड है 1 2, इसका नाम देंगे 1 2 नंबरिंग, और ये जो रॉड है 3 4. Motional EMF formula will take it. If the resistance of the loop का resistance कितना है? 6 milli ohm. There's a resistance of the loop also given. Will work out here. What is EMF induced? Motional EMF formula. This problem belongs to motional EMF. So what is the formula for motional EMF? E equal to BLV. First we'll calculate EMF. यहाँ पे हम EMF induced across the rod 1 2 ले लेंगे. So वहाँ पे magnetic field कितना है? B12. उसका लेंथ कितना है? लेंथ L12 और वेलोसिटी V. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है अलग है? सो B12. इट वेरीज विथ x. इसको x का वैल्यू कितना है यहाँ पे? सो 0. तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट लोकेशन ऑफ दिस साइड, एट साइड 1 2? बिकॉज यहाँ पे तो x इक्वल टू 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो यहाँ पे? आपको 0 हो गया. तो मैग्नेटिक फील्ड एट 1 2 विल कैलकुलेट. पहले ये कैलकुलेट कर लेंगे हम. तो मैग्नेटिक फील्ड एट 1 2 इट विल बी 0. इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड एट 5 4, मैग्नेटिक फील्ड एट 5 4 और से 3 4, इसका वैल्यू हो -10⁵. एक्स का वैल्यू 12 सेंटीमीटर. सर यहाँ पे 12 आप ऑन व्हाट बेसिस लिख रहे हैं? एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे? If you measure distance from here, the value of x is how much? 12 centimeter. Substitute the value of x here 12. Then we'll get the magnetic field at the location of rod 3 4. इसको हम नाम दे देंगे B12 B34. ओके, यहाँ पे सॉल्व करेंगे. B12 0 हुआ, लेंथ ऑफ द रॉड 5 सेंटीमीटर, वेलोसिटी 5, A 0. So no EMF induced in this rod. इस रॉड में EMF कुछ भी इंड्यूस नहीं हुआ है. The reason for that, the magnetic field itself is 0 इस रॉड के लोकेशन पे. Then what is EMF induced in the rod 2 4? EMF induced in the rod 2 4. 2 4 में भी 0. क्यों 0 है? Because the length L bar L24 is parallel to velocity, no? अगर जो रॉड का वेलोसिटी है, जिस रॉड में वेलोसिटी पैरेलल रहता है, सो उसमें ईएमएफ इंड्यूस विल बी 0. So this rod no EMF induced. Even this rod also. The reason for that, because the length are parallel. Similarly, L13 equal to 0. The reason for that, EMF किस लिए 0 है बोले तो E130. Why E130? Because L13 is parallel to velocity. There's a basic concept of EMF induced, motional EMF का. Okay, next rod E34 ले लेंगे. E34, magnetic field B34, length L34 and velocity V. लूप का वेलोसिटी भी इस रॉड का वेलोसिटी हो जाता है. देन
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, -12 इंटू 10⁻⁻5, लेंथ ऑफ द रॉड 5, यहाँ पे स्पीड कितना हुआ 5। सो यहाँ पे आपको 25 इंटू 12, 25 इंटू 12, 300 इंटू 10⁵ वोल्ट। Okay, fine. Huh? Now, these things we have to convert them into the meters, huh? Because SI units are needed. All these are in centimeter. Huh? They are in centimeter. This 5 centimeter, AB centimeter में और velocity भी centimeter में. We have to convert that into actually the meter. तो ये कितना हुआ आपको? This will become E34. Velocity, length, magnetic field centimeter में है ना? Yeah, 10⁻⁻2 we have to adjust. Huh? This will be 300 into 10⁻⁻7. यहाँ पे this is there in the magnetic field कितना सेंटीमीटर में है. We have to convert that into meter per meter. 10⁻⁻2 यहाँ पे 10⁻⁻2 into 10⁻⁻2. Okay, fine. Okay, this EMF हो चुका है. So this is the EMF induced. So now what is the Motional EMF induced? EMF induced due to motion of the rod means E12 plus E24 plus E13 plus E34. 0, 0, 0. ये हुआ 300 into 10⁻⁻7 वोल्ट. ये जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज द मोस्ट ईएमएफ ड्यू टू मोशन ईएमएफ, ये वेलोसिटी के वजह से. दिस इज अ लूप. सर ओके फाइन, यहाँ पे पोलैरिटी कैसे देंगे आप? ओके देन वी हैव टू टेक द लेफ्ट हैंड रूल. ये जो थंब है, ये बी बी बार, इसका बी बार, ये वेलोसिटी. ये जो है ना द थंब है, सो दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ई बार. ये हुआ थंब, ये हुआ इंडेक्स फिंगर, पॉइंटिंग फिंगर बोलते हैं हम. ये बीच वाला अंगूठा, सो ये हुआ मिडिल फिंगर. thumb will indicate the direction of V bar. और ये जो पॉइंटिंग फिंगर बोलते हैं हम, दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ V bar. मिडिल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. फाइन. सो यहाँ पे हम रख देंगे यहाँ पे. सो द डायरेक्शन ऑफ V bar, द डायरेक्शन ऑफ V bar इज आउटसाइड. V bar हुआ आउटसाइड, वेलोसिटी और टुवर्ड्स. Okay, fine. So the thumb will be directed downward. So therefore, this will be positive, this will be negative. Similarly, there is no EMF induced, so we can replace this with a cell. So the net EMF induced in the loop will be only due to this E34. No EMF induced in these three rods. Okay, sir, like और एक दिया है सर, like what about this one? No, this magnetic field also varies with the time. Due to magnetic field varying with the time, again we should calculate. That will calculate the EMF induced due to the variable magnetic field that varies with the time. So next, EMF induced due to the time variation. This should be equal to
A dB by dt. Area of cross section of rod 5 into 12 into 10 to power of minus 4. मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 5 into 10 to power of minus 2 to dB by dt कितना हुआ 10 to power of minus 3. तो ये सब हो चुका है 60 into 10 to power of minus 7 volt. ओके सर, इसका डायरेक्शन B bar flux is increasing. Flux is increasing. Okay, B bar out of the plane. So therefore, flux positive. Positive flux increases d phi by dt positive. EMF induced negative. Negative means यहाँ पे induced current will flow in anti-clockwise direction. Okay, fine. And already due to this cell also it is flowing. So दोनों EMF now will get added up. EMF induced will be, the formula will be E equal to minus S minus d phi by dt. So EMF induced here, यहाँ पे negative हुआ. Okay, fine. Already this EMF induced is negative. Why negative? Because again यहाँ पे हम अगर Lenz law रखेंगे, flux positive. Then d phi by dt क्या हो रहा है यहाँ पे? d phi by dt is decreasing, no? B bar is positive. d phi by dt negative. EMF induced will be, okay, it is moving speed यहाँ पे. Flux यहाँ पे positive है, increasing. d phi by dt will be negative. d phi by dt positive, EMF induced will be negative. Okay, दोनों EMF like due to variation of time and due to change in space, दोनों EMF यहाँ पे will be negative. So therefore the net EMF will be, we have to add up. EMF induced due to time, EMF induced due to the motion. तो दोनों का वैल्यू कितना हुआ 300 into 10 to power of minus 7 plus 60 into 10 to power of minus 7. 360 into 10 to power of minus 7. Power dissipation will be E square by R. 360 into 10 to power of minus 7 is का whole square by resistance of the circuit. Resistance of the circuit यहाँ पे 6 milliohm. 6 into 10 to power of minus 3. Okay, solving, we'll get the required answer. 216 into 10 to power of minus 9 watt. Very lengthy, very tough. यहाँ पे आपको you have to draw the diagram. यहाँ पे net EMF induced will be, the idea is very simple. There will be EMF induced due to the motion of the loop and also due to the change in magnetic field. And यहाँ पे कौन सा magnetic field है? Magnetic field यहाँ पे भी it's a varies with space. The magnetic field varies with the distance and also varies with the time. And the loop is moving. Little bit, I think, will be difficult for students to really analyze this much. We'll take the next question. Okay, no. What is this conventions current का? What is the general method, sir? आप एक बार हमको Lenz law थोड़ा clarity देगी. The basic use of Lenz law is to predict the direction of current. So let me revise the basic convention.
अगर B bar out of the plane in a region, if B bar is out of the plane B, then its flux will be positive. अगर B bar into the plane in a region, this will make it flux negative. Okay, fine. Next, अगर induced EMF positive or induced current positive, it will flow anti-clockwise. अगर EMF induced negative or current negative, the induced current will flow clockwise. Next, the basic formula E equal to minus d phi by dt. अगर flux increasing, next fourth condition, if flux increasing, positive flux increasing. Let me rearrange this one. There's a convention थोड़ा याद कर लो, very easy for you. Positive flux increasing, इसको हम d phi by dt पॉजिटिव करते हैं. अगर पॉजिटिव फ्लक्स डिक्रीजिंग, d phi by dt ये हुआ नेगेटिव. सिमिलरली लास्ट वन, अगर नेगेटिव फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, d phi by dt will be negative. अगर नेगेटिव फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, so d phi by dt पॉजिटिव. सब यहाँ पे हम फॉर्म में लगाते हैं. We'll come back to this question. There's a Lenz law convention, very important, जाके आप मेरे चैनल में देखिए. Explained very beautifully with examples. Please refer my channel. This is a basic Lenz law. Okay, we'll take the coil. Half a revolution. So there's a coil. Like of area. पता नहीं इसका like is it a rectangle, square? So इसका dimensions, just the given area, it can be it can be square coil or the circular coil. And it is rotating in a uniform manner perpendicular to axis of rotation of coil. The coil is rotating. So what is the axis? Axis will be, यहाँ पे हम axis ले लेंगे, and there is a magnetic field perpendicular to axis of rotation. So magnetic field यहाँ पे ले लेंगे. Okay, this is the magnetic field. This is about the coil rotating in a uniform magnetic field. The maximum voltage generated in the coil is, इसका what is the meaning of half a revolution? One revolution 2 pi, half revolution. So इसका यहाँ पे हमको ओमेगा इंफॉर्मेशन दिया है. So इसका ओमेगा वैल्यू हुआ half a revolution pi per second. So pi radians per second इसका ओमेगा का वैल्यू. इसका एरिया ऑफ द लूप पता है हमें. So कितना 0.2 मीटर स्क्वायर. नंबर ऑफ टर्न्स, इसका नंबर ऑफ टर्न्स है n. B bar value 0.01. So what is the flux linking this? B bar dot A bar. A or B A cos theta. Then we'll differentiate this with respect to time. D phi by dt minus, then इसे पहले theta, it is rotating with constant velocity, so omega equal to theta by t. So cos theta over omega t. And now इसको differentiate करेंगे. So then we'll get B omega sin omega t. What is the formula? E equal to minus d phi by dt. D phi by negative of minus will become plus. So B omega sin omega t. Now
अगर यहाँ पे कॉइल में एक ही टर्न है तो ओके फाइन दिस, कितना टर्न्स है यहाँ पे, 200 टर्न्स है, सो देयरफॉर नाउ द फ्लक्स विल बी 200 टाइम्स। यहाँ पे एन एडजस्ट कर लो, so this will become NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम वोल्टेज, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, कहाँ पे, सो दिस NBA ओमेगा, सो E इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी। सो ई मैक्स का वैल्यू कितना हुआ, NBA ओमेगा, नंबर ऑफ टर्न्स 200, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स 200, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू 0.01, एरिया 0.2 एंड ओमेगा का वैल्यू पाई। यहाँ पे तो 2 पाई बीटा, यहाँ पे हम पाई पाई ऐसे रखेंगे, इसका वैल्यू हुआ 0.01 200 2 0.45, ये हुआ 4 पाई बाई 10 और 2 पाई बाई 5। आंसर आंसर यहाँ पे आंसर ले लेंगे, दिस विल बिकम 5, सो बीटा का वैल्यू विल बी 5। ओके फाइन, सो दिस अ कन्वेंशन, सो वंस अगेन माय लेंथ लॉ रिवाइज कर रहा हूँ, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कौन सा भी प्रॉब्लम है, बी बार आउट ऑफ द प्लेन, वहां पे फ्लक्स हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और बी बार इनटू द प्लेन फ्लक्स नेगेटिव, फाइन। अगर सभी कैलकुलेशन करने के बाद ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव, सो वहां पे इंड्यूस करंट विल फ्लो एंटी क्लॉकवाइज। अगर ईएमएफ इंड्यूस नेगेटिव रहे तो इंड्यूस करंट विल फ्लो क्लॉकवाइज। देन दिस द फॉर्मूला, यहाँ पे हम काम क्या करेंगे, फ्लक्स फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव, द फर्स्ट थिंग यहाँ से हम पता करेंगे लेके फ्लक्स पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव फ्लक्स इंक्रीजेस देन डी फाई बाई डी टी पॉजिटिव, पॉजिटिव फ्लक्स डिक्रीजेस डी फाई बाई डी टी नेगेटिव, negative flux decreases, yeah, this convention, negative flux decreases d phi by dt positive, negative flux increases d phi by dt negative, substitute that d phi by dt with sign here। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है बोले तो डी फाई बाई डी टी विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो डी फाई बाई डी टी नेगेटिव, substitute d phi by dt with sign, then we'll get EMF sign, then based on that we should predict the current। Okay, we'll take the next question. The magnetic flux linked with a closed circuit of resistance 8 ohm varies with time. The induced current is asking. So what is the, we know the flux d phi by dt. Differentiating this, we'll get the rate of change of flux. So this will be 10t minus 36. Then according to Faraday's law, EMF induced equal to minus rate of d phi by dt. This will be minus of 10t minus 36. The induced current is asking at what at time 2 seconds, at 2 seconds यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे EMF induced कितना है, this will be 10 into 2 minus 36, 20 minus 36, यहाँ पे हमारा वोल्टेज हुआ 16 वोल्ट EMF induced। देन इसका रेजिस्टेंस E by R, so 16 by 8, 2 ampere। Okay sir, like what is actually idea here? यहाँ पे जो हम, there is some loop, imagine यहाँ पे loop है, and the magnetic field is varying with the time, कुछ इस तरह से वेरी हो रहा है। देन यहाँ पे इंड्यूस करंट जो फ्लो हो रहा है, that we are calculating, and what is R? R is the resistance of loop, closed circuit। what do you mean by closed circuit? loop coil, इसका मतलब coil or loop or a ring, some conducting
क्या तो रहने दो यहाँ पे अंदर, so only the its resistance is 8 ohm, will apply it. Very simple formula. यहाँ पे this word little bit confusion. Closed circuit, sir, what do you mean by closed circuit? Closed circuit means some coil or loop or some network. We take the next one. A small square loop of side length L is placed inside a large square loop of side length L. The loops are coplanar and the centers coincide. The value of mutual inductance of the system. Okay, I needed a frame. यहाँ पे एक स्क्वायर लूप है, स्मॉल स्क्वायर लूप. इसमें छोटा सा स्क्वायर लूप दूसरा वाला इसके अंदर रख देंगे, बड़े वाले के अंदर में रख देंगे. इसका लेंथ कितना है? एल. इसका लेंथ है स्मॉल एल. इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहे हैं. The value of mutual inductance of the system. Where L is equal to L square. इसका लेंथ कितना है? L square लेंथ है. And then the value of mutual inductance of the system. Small. So definitely, so this side length will be very less compared to it. So we'll calculate the magnetic field. We'll calculate the current. We'll assume the current I flowing. We'll get the mag field linking it. Then flux linking this coil. Then we'll get the basic idea. No, sir, what is this L equal to L square? इसका लेंथ जो है, this is 2 times of it. Then, how to, what is the basic approach? First, we'll calculate the magnetic field. We'll calculate the magnetic field due to this square loop. यहाँ पे center में means ये जो अब so like means like why you are assuming current is one. So if you can assume current in this and you can calculate flux linking outer loop, that'll be very lengthy. What is the easiest approach is like assume current flowing in bigger loop, calculate magnetic field linking the smaller loop, then you can work out. ये जो will make it इसको और छोटा बना देंगे, so we'll get some basic picture. यहाँ से हम डी, तो इसका लेंथ हुआ L/2. This angle हुआ a 45 degrees. D का वैल्यू कितना हुआ? We have to calculate the D. Sin cos 45 L/2. So 1/√2. So D value हुआ L/2√2. So D means perpendicular direction. यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे पहले ड्यू टू दिस साइड A12 साइड वजह से. जब एक करंट फ्लो होते रहता है, so जब एक करंट फ्लो हो रहा है रॉड में, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. सराउंडिंग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. So the center of the loop magnetic field कितना है? Because of the flow of current in this rod. So we will go for electromagnetism. थोड़ा electromagnetism formula ले लेंगे. Magnetic field at 1,2 is equal to mu naught I 4 pi B sin alpha and A value A or beta.
So sin alpha plus sin beta mu naught I O pi. D value will be L by 2 root 2. Cos 45, tan 45, to the calculation. Tan 45 equal to D divided by L by 2. Tan 45 का value हुआ 1. So D will be L by 2. Tan 45 will be opposite by adjacent. तो यहाँ पे हुआ इसका वैल्यू हुआ L by 2. Sin alpha, sin 45, 1 by root 2. 1 by root 2. So mu naught by 2 pi L. 1 by root 2, 1 by root 2 will be 2 by root 2. इसका वैल्यू हुआ root 2. और इसका टोटल वैल्यू mu naught I by pi L root 2. ये जो हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं ना, दिस इज द फील्ड ड्यू टू दिस रॉड ओनली. ये जो करंट फ्लो हो रहा है इस रॉड 1 2 में, यहाँ पे एट सेंटर ऑफ द लूप इट विल प्रोड्यूस दिस मच ऑफ फील्ड. सो बाकी रॉड भी, like again you go for the right hand thumb rule. According to right hand thumb rule, how the B bar will be. यहाँ पे B bar आपको will be out of the plane. और जब एक करंट, सेम करंट ए रॉड में भी फ्लो रहा है, सो इसका मैग्नेटिक कितना हुआ, इसका मैग्नेटिक भी इक्वल टू सेम थिंग. सो B12 इक्वल टू B23 इक्वल टू B31 इक्वल टू B34 equal to B41. This total will write it some B और B नॉट बोल देंगे. तो नेट कितना हुआ 4 B नॉट. नेट B12 B23 B34. This will become everything B नॉट. इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. म्यू नॉट 4 into म्यू नॉट I pi L root 2. 2 root 2 mu naught I pi L. ये वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 2 ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द आउटर लूप. So we'll calculate flux linking the smaller loop equal to B into L square. इसका एरिया, स्मॉल लूप का एरिया कितना है L square. और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, will be B. The net field will be B. Okay sir, like मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ पे सेंटर पे फाइंड आउट कर रहे हैं, बट इधर सेंटर के लगे चारों तरफ यहाँ पे तो फील्ड तो डिफरेंट होता है. तो व्हाट इज द असम्पशन, द लूप स्मॉल स्क्वायर लूप मींस हम जो यहाँ पे फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका वैल्यू हर इस लूप में सेम रहता है. द वैल्यू विल बी दिस मच, इट विल बी 2 root 2 mu naught I pi. गेटिंग मींस हम जो यहाँ पे सेंटर ऑफ द लूप में जो फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी कांस्टेंट थ्रू द लूप, बिकॉज इसका डायमेंशन इतना छोटा है कि द मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज एट सेंटर इट विल बी सेम एवरीवेयर because of the condition small square loop. This we have to underline. This idea is very important. Small square loop. इसी की वजह से स्मॉल वर्ड वजह के इस वजह से हम यहाँ पे डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख रहे हैं. अदरवाइज वी कांट. अदरवाइज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हर जगह लूप में डिफरेंट रहता है, स्मॉल लूप में, सिंस इसका डायमेंशन इतना छोटा है कि द मैग्नेटिक फील्ड विल बी कांस्टेंट थ्रू द लूप. Then we'll substitute the value. This will become 2 root 2 mu naught I pi L square. What is the mutual inductance? इसको हम नाम दे देंगे. So this is X, और mutual inductance will be flux linking smaller loop
due to current in the bigger loop. And हम जो flux calculate करे, there is a flux linking the smaller loop. Capital I word. Now यहाँ पे substitute कर लेंगे हम. So the values, this will be 2 root 2 mu naught I L square pi L. Current का value कितना है? I. Then this will be mutual inductance. इसका value calculate करेंगे. इसका value और 2 root 2 mu naught L square pi L. 2 root 2 mu naught का value कितना है? 4 pi into 10 to power of minus 7. Pi L. L square का value कितना है? L. यहाँ पे हमको 8 root 2 into 10 to power of minus 7. 8 को हम अंदर भेज देंगे. So this will be 64 into 2 into 10 to power of minus 7. So ये हुआ total 128 into 10 to power of minus 7. So what is the idea? आपको थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर का लेके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग रॉड, दिस फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है. देन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेंटर ऑफ लूप हर एक रॉड के वजह से लेके चारों रॉड है. एक लेके ड्यू टू वन रॉड व्हाट इज द फील्ड, नेक्स्ट ड्यू टू अदर रॉड, लाइक दिस ड्यू टू 4 रॉड्स व्हाट इज द नेट फील्ड. दैट्स व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग. देन ये जो फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस का, flux linking small loop to the current in the bigger loop, or flux linking the loop to the current in the smaller loop. That will be the mutual inductance. Now we take the next question. A horizontal straight wire 5 meter long extending from east to west. यहाँ पे थोड़ा directions define कर लेंगे. North, south, this is west, this is east. Component of Earth's magnetic field. Potential value of EMF induced in the wire when it's well off it. यहाँ पे ईस्ट वेस्ट. सो रॉड जो है इट इज फॉलिंग लाइक दिस. इसका रॉड ले लेंगे. लेंथ ऑफ द रॉड इज ईस्ट वेस्ट, अलोंग द ईस्ट वेस्ट. राइट एंगल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है. ओके फाइन. इस डायरेक्शन ले लेंगे. दिस हॉरिजॉन्टल एंड फॉलिंग वर्टिकली. So there's a formula of the motional EMF. ये वाला this is the rod. ये जो ब्लू कलर का है, जो कलर दे रहा हूँ, ये रॉड है. तो यहाँ पे मोशनल ईएमएफ फॉर्मूला विल लगा देंगे. B equal to LV. Magnetic field, length of the rod L, all they are mutually perpendicular. So magnetic field value कितना है? 0.6 into 10 to power of minus 4. Velocity कितना हुआ रॉड का? 10 और लेंथ 5. This will become 3 into 10 to power of minus 3 volt. ओके सर, इसका डायरेक्शन बता देते सर कौन सा एंड पॉजिटिव नेगेटिव है. तो विच एंड विल बी पॉजिटिव नेगेटिव. अगेन द फॉर्मूला, ये जो थंब पॉइंटिंग फिंगर, दिस द मिडिल फिंगर. ए हुआ डायरेक्शन हुआ ई. थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ ई बार.
A pointing finger है, this will be the direction of b bar, and a middle finger, this will give direction of velocity. और velocity और इसका length equal to BLV, no? So this will be the length b bar velocity. No, so b bar velocity. So यहाँ पे thumb will be direction will be like this. यहाँ पे लगा दो तुम b bar into the plane. अपना हाथ घुमाओ. So like यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो b bar आपका वो जो पॉइंटिंग फिंगर इसको बोलते हैं ना. तो दिस विल बी इनटू द प्लेन. फाइन. और मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में रख दो. आपका थंब है ना, सो दिस विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट. तो जिस डायरेक्शन थंब पॉइंट करता है, सो दैट एंड शुड बी पॉजिटिव. सो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव. दिस लेफ्ट हैंड थंब रूल इज व्हाट यू शुड यूज. We'll take the next question. A square loop of side 10 theta and resistance is placed vertically in east-west plane. Uniform magnetic field is set up across the plane in northeast direction. The magnetic field is decreased to 0 in 1 second. The magnitude of EMF induced. East-west plane. North, south, west, east. East-west plane इसको बोलते हैं हम. Okay, fine. Uniform magnetic field set up across the plane in northeast direction. This is east, this is west. Okay, fine. East-west plane बोले तो then this particular thing, and in northeast means it will make 45 degrees. So the B bar will make it, and a over plane, a over plane. Agree this or थोड़ा बहुत easy करने के लिए we'll take x y z axis. So loop कौन से plane में है? The loop is in look at this. A जो loop है, this is in east west plane. और coordinate system भी define करेंगे. So this a over loop, each 10 centimeters square. जो magnetic field है, this is making angle 45 degrees. This is what assumption you can do. A over loop. Okay, agreed? Then, so what is the flux? Flux is equal to the magnetic field यहाँ पे vary हो रहा है. So flux equal to BS cos theta. Magnetic field कितना है? It is varying with the timer. So we'll differentiate this. d phi by dt should be equal to dB by dt s cos theta equal to minus d phi by dt. So minus dB by dt s cos theta. तो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. dB by dt decrease to 0 in 1 second. magnetic field कितना है? 0.2. It will become 0 in 1 second. So the rate of change this will be 0.2 by 1. Area of cross section कितना है? 10 centimeter square. 10 centimeter square. So ये हुआ 10 into 10 to power of minus 2, 10 into 10 to power of minus 2. SI unit.
मीटर स्क्वायर वी हैव टू कन्वर्ट. Agreed. That इसका एंगल 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, तो 0.2 ये 10 to power of -2 और इसका 1/√2. ये वो 2 into 10 to power of -4/√2 और √2 into 10 to power of -4. The magnitude of EMF induced पूछ रहे हैं. I think ये वाला 10 to power of -4 है. Okay, fine. तो इसका वैल्यू हुआ 2. Okay, sir, negative sign. It shows that like flux will be positive. Then this negative flux decreasing, positive flux, or the flux is positive, positive flux decreasing, d phi by dt negative, EMF induced positive. तो यहाँ पे induced current जो है, it will flow anti-clockwise. There's a purpose of why this negative sign we are retaining it. Equal to like magnitude. This is the equal to minus d phi by dt. dB by dt a negative sign. Okay, let me explain clearly. There's a basic definition, equal to minus d phi by dt. जो magnetic field है, it is decreasing, so rate of change of flux will be negative. So यहाँ पे minus है. Minus of minus, this will be plus. Okay, fine. This is a Lenz law convention. पिछले प्रॉब्लम में हम जस्ट एक्सप्लेन कर चुका हूँ. टेक हेल्प ऑफ इट. दूसरा प्रॉब्लम ले लेंगे. Two coils have mutual inductance. The current changes in first coil according to the relationship I naught. The maximum value of EMF induced in the coil is. यहाँ पे दो कॉइल है. ये जो there's a coil 1. दूसरा वाला यहाँ पे. Agreed? दोनों कॉइल यहाँ पे कॉइल 1 कॉइल 2 जस्ट नंबर इंडिकेट करेंगे. इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दिया? 2 मिली हेनरी. द करंट चेंजेस इन द फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप. तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है आई. सर कॉइल आर दे सर्कुलर? वी डोंट नो. जस्ट प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये दो कॉइल ले रहा हूँ. ओके, एग्रीड. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फ्लक्स लिंकिंग द सेकंड कॉइल ड्यू टू द करंट flowing in the first coil. Then we'll differentiate d phi 2 by dt m di1 by dt. So EMF induced second coil equal to rate of change of current in the first coil. Mutual inductance कितना? Value 0.02. di1 by dt. di1 by dt इसका value I naught omega cos omega t. 2 into 10 to power of -3 I naught का वैल्यू 5, ओमेगा का वैल्यू 50 पाई cos ओमेगा t. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ पूछ रहे. सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ? 10. इसका कितना हुआ? 25 25 25 25 into 250 500 0.5 0.5 पाई cos ओमेगा t. इसका मैक्सिमम वैल्यू हुआ 0.5 नो.
the equation will be E max equal to cos omega t. So E max ka value, E max is how much? 0.55. 0.55, we can write pi by 2. So our answer will be 2. आपको ये याद रखना है. Flux linking the second coil is equal to mutual inductance into first coil. So these are the formulas. What is the formula of mutual inductance? EMF induced in second coil due to rate of change of current in first coil, or flux linking second coil due to current flowing in the first coil, or EMF induced in first coil due to rate of change of current in the first coil, or flux linking the first coil due to current in the second coil. अगर ये जो फॉर्मूलास आपको याद है तो आप एक कर सकते हैं. दिस प्रॉब्लम इज वेरी इजी. यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? मैक्सिमम इसका कॉस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? दिस 0.5 ओनली, 0.5 पाई ओनली. So that you have to simplify. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. A rectangular loop of length 2.5 meter and width 2 meter is placed at 60 degree to a magnetic field of 4 Tesla. The loop is removed from the field in 10 seconds. यहाँ पे the average EMF induced in the loop. Maximum अगर आप इसको इमेजिनेशन करके प्रॉब्लम सॉल्व करें तो लिटिल बिट इजियर rather than drawing diagram. मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, बट एग्जाम में यू शुड नॉट ड्रॉ द डायग्राम. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. हर एक प्रॉब्लम में डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकते हैं what is the concept involved, how to think. But in exam, you should have this imagination. Able to understand. तुम लोगों को पता इमेजिनेशन ये जो डायग्राम में जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो आपके मन में अगर तुमको ये कंस्ट्रक्ट करे तो then writing equations will be easier. So this is the loop. Placed 60 degree to a magnetic field. Means जो magnetic field यहाँ पे link हो रहा है, this magnetic field, this will make an angle 60 degrees. Average EMF induced in the loop during this time. The loop is removed from the field in 10 seconds. So 60 degree, how to imagine this 60 degrees sunlight? What direction the 60 degree? Because this information not available. Perfect information not available. $60 degree to the magnetic field. No. Sir, how to assume that a jo like a 60 degree, if telling place 60 degree means the end cap of the loop will make an angle. इसका end cap रहता है. So what is end cap? End cap is the angle made by the area vector. Side length 2.5 meter, width इसका length 2.5, width है 2 meter. यहाँ का B value. This B bar vector will make an angle 60 degree with the loop. ये जो है, this is the loop. Average EMF induced. इसको loop को क्या हम will remove from the magnetic field. हम इसको हटा देते हैं. So what is average EMF? पहले flux linking calculate करेंगे. This will become B bar dot S bar BS cos theta. ये जो 60 degrees. No, what is the B value? For area of cross section LB cos theta. Now you have to ask question, sir.
पहले आप इसको 60 बनाए, नाउ आप इसको 60 बनाए. Now whenever we say 60 degree, pay the 60 degree to magnitude. ये जो 60 degree with respect to what we should measure? This is the angle between B bar and the end cap of the loop. There's a convention, what they mention. Fine. So whenever they say this angle, the magnetic makes an angle 60 degree with the loop. So like this 60 degree with respect to what? With respect to end cap of the loop. And what is end cap? End cap will be perpendicular to the loop. These are conventions. So यहाँ का B value 4, length 2.5 into 2 cos theta, cos 60 degree, 4 into 5 by 2 into 2 into 1 by 2. फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है? 10 वेबर और 10 टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर्स, इसका यूनिट वेबर भी बोलते हैं. द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड, सो ई एवरेज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स minus 0 by delta t. Change in flux, we'll write it delta phi. फ्लक्स का वैल्यू कितना है? 10. टाइम कितने सेकंड्स में? 10. So this will be 1 minute. Okay sir, fine. यहाँ पे आप -1 +1 एग्जाम में ऑन व्हाट बेसिस आप +1 या -1 लेते हैं? So we will bring the Lenz law convention. Flux is positive. Positive flux linking the loop is positive. किस लिए? Because component of B bar is out of the plane of the loop. Then अगर आप इसको लूप को रिमूव कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड से, तो फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, सो डी फाई बाई डी टी यहाँ पे हुआ नेगेटिव हुआ. और व्हाट इज द फॉर्मूला? इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. सब्स्टिट्यूट दिस नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. तो ईएमएफ कितना हुआ ना? ईएमएफ विल बी पॉजिटिव. यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस विद साइन. नो, d phi by dt with sign, negative of negative will become positive. I'll write one more step. Some of you are getting confusion. Iska with the sign. Okay, bracket. See the bracket. Now this will become how much? d phi by dt, and we got positive. So therefore, option 1 will become Lenz law convention. ये इसी वीडियो में आफ्टर ड्यूरिंग सेकेंड प्रॉब्लम आई एक्सप्लेन्ड. एक बार रिवाइज कर लो लेंस लॉ. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टोटल ईएमआई विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए फैराडेस लॉ है, डायरेक्शन के लिए लेंस लॉ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलरेडी लाइक so this about the like a जनवरी शिफ्ट का. So we have